was 96.8. एंड आपका जैट में कितना आया था? That was 98. 98, कैट में 96, जैट में 98, कैट फोड़ा, भाई ने जैट फोड़ा और फिर स्नैप भी फोड़ा. स्नैप टॉपर यार, he has scored 99.50 percentile in snap. I would love to know क्या क्या छोड़ा, न्यू बेबी एम छोड़े या फिर उससे भी कोई बड़ा भी स्किल छोड़ा. All right, hi guys, welcome back to this another MBA podcast with Naman. Naman is basically from SCMHRD. Snap topper यार, he has scored 99.50 percentile in snap. 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस का, and then he opted for SCMHRD. बट बिफोर दैट ना मैंने सुना कि यू हैव लेफ्ट लॉट ऑफ कॉलेजेस एंड थोड़ा सा वो सस्पेंस भी रखा था. आई वुड लव टू नो क्या क्या छोड़ा, न्यू बेबी एम छोड़े या फिर उससे भी कोई बड़ा भी स्किल छोड़ा. Apart from new and baby IMs, I left XLRI Jamshedpur. XLRI Jamshedpur? No way. No way, man. Honestly. I know it's hard to digest, but yes, it's true. नहीं भाई, नहीं हो रहा इंटरव्यू. नहीं यार, आई एम शॉक्ड एक्चुअली. XLRI Jamshedpur. और आप कहाँ से हो? This is another twist. I'm born and brought up in Jamshedpur. अच्छा चलो ठीक है. Now this is getting interesting. Why XLRI Jamshedpur and why SCMHRD? मतलब बच्चे भी डाइजेस्ट नहीं करेंगे. एंड दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड बाय द वे. ऐसा नहीं है. SCMHRD is a very good brand, very good college. Absolutely, absolutely. So it's not, you cannot digest it. Perfect है. चलो मैं मान लेता हूँ कि XLRI जमशेदपुर आप छोड़ के SCMHRD आ सकते हो. Now we want reasoning. कि केतन सर, मैंने ये चीजें देखी, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे XLRI जमशेदपुर नहीं जाना है और मुझे SCMHRD जाना है. See, what I did is I followed my passion. Coming from 4 years of IT background, Nice. I was very much clear that I don't want to go to HR. I don't want to opt HR. I wanted to do something which will boost up my experience, my technical expertise. Nice. And here at SCMHRD, I chose business analytics. Nice. So we have a program. Business analytics. B is doing really good. So this is a myth in SCMHRD that it is known for HR, sales, marketing. Nice. But it has a program business analytics which is doing doing very fantastically. So and very few colleges in India have this program business analytics, and SCMHRD is pioneer in one of them. So business analytics, also in business analytics you will get like it is an agnostic branch program basically. So someone is interested in HR, they can see their future in HR analytics. Someone interested in sales and marketing, they can go for marketing analytics. They can, if someone is interested in finance, they can go for finance analytics. So true that. So through this program, you can chase your passion and you can excel in that. True that. देखो यार, you know, when we started, it was a shocker, and very sure जब आप देख रहे हैं ये video, you know, it might be shocker to you also. But guys, you know, एक चीज है जो हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, that the time is now changing. You know, एजुकेशन डोमेन में ना वही घिसी-पिटी चीजें चलती रहती है, वही रैंकिंग चलती रहती है सालों से. बट यार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जेन्युइनली स्मार्ट होते हैं. आप देखोगे SCMHRD में हमने जाके जो इंटरव्यूज करे थे, बाकी बच्चों के भी इंटरव्यूज आएंगे, आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखेगा. सो आई वुड से इट्स दिस, ये जो जनरेशन है ना, इट्स वेरी वेल इन्फॉर्म्ड. अब ये जो बंदा है नमन ने ये डिसीजन जब लिया, तब उसने कहा कि सर मैंने पैशन फॉलो करी, मुझे एनालिटिक्स में जाना था. उसके लिए मैंने देखा कौन से कॉलेज का कोर कंपिटेंसी एनालिटिक्स में आता है. Now this is being very smart of you, dude, to be very honest. And ये ना eventually trend बनेगा जहाँ पे बच्चे smart होते. तो अगर आपको आइडिया नहीं है इस चीज का, it might be a shocker, but guys, trust me, ये चीज होती है. And that is the reason when you choose a B school, you need to be very thorough with that B school, what it does, how it does, and you know what it is famous for. So that's a bold decision, to be very honest. And would love to know more. तो 4 साल के बाद एग्जीक्यूटिव भी कर सकते थे ना नमन भाई, आपने 2 साल ही क्यों किया? 2-3 पॉइंट्स बता देना. बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं, I'll explain. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो शायद से वेल इन्फॉर्म ना हो, तो उनको लगता है कि यार सर मेरा 4 साल का वर्क हो गया, पहली बात मेरे को तो प्लेसमेंट ही नहीं मिलेगा, मेरे को समर भी नहीं मिलेगा, मेरे को अच्छा बी स्कूल भी नहीं मिलेगा. तो ये जितने भी ऐसी मिसकंसेप्शंस है, जरा आप उसके ऊपर थोड़ा बता दो बच्चों को. Sure. So after 4 years I thought that MBA जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, it is very essential because एक होता है you will gain knowledge through online course also or executive, but जो peer learning होता है, what you learn in class, sitting in the class, face to face direct from the faculty, और you जो projects होते हैं हमारे, you work in the groups, that is I think more important. And this is the time. इसके बाद maybe if you go for PhD, that's other case, but this only time you will be getting to lead the college life or live or to have fun. Apart from this academics, there are case competitions. I'm very much enthusiastic about case competitions. I was the
national finalist in my BTech, and Wow. through that I bagged the PPO. Wow. And then I joined L&T. So I'm very enthusiastic about case competitions, and you will find SMHRD is such a college who has direct entry to almost all the corporate case competitions. Really, you will हाँ find. हाँ एक्चुअली आप जाके SMHRD के बच्चों को से बात करोगे ना, आप एलुमनी वगैरह से भी बात कर लेना, ये लोग फाड़ते हैं केस कॉम में, एंड दे आर लाइक फेमस फॉर दैट. So you got into the same, you know, cool hai. So I found that what my interest lies, SCMHRD is offering almost everything. True. What I want. That synergy you found out. Okay. Be it the course, be it the opportunity to project in the case competitions, be it we have a lot of fun activities within the college. So these things you will get when you have a 2-year residential program. Exactly. And you know, just to add on, 2 साल वाले MBA में क्या होता है ना, you can explore like anything. Definitely. मतलब अगर आपको शिफ्ट मार रहे हैं ना करियर में, तो 2 साल का MBA बनता है. एग्जिट क्या हो जाता है ना, 4-5 साल के बाद जब कंपनी भी आती है, they give you vertical promotion. It's not the horizontal. They give you vertical. तो उसमें क्या होता है ना, आप ज्यादा मूव नहीं कर सकते इधर उधर. Correct. Very smart. Now my next question. I have heard a lot about BA. बहुत सारे बच्चे हमारे BA में हैं, ये भी अपना ही बच्चा है. You tell me something about BA जो बाहर की दुनिया को ना पता हो कि BA में ऐसा, because BA is now competing with the flagship, close by आ ही चुका है. So tell me something about BA program apart from कि इसका 2 साल का मिनिमम वर्क का क्राइटेरिया है, वो छोड़ के आप बताइएगा. So BA is just like the flagship program we have, 2 years residential program, and where you will be we'll be studying all the we have the courses of HR, finance, and like in first semester we'll be getting to know all the core programs as well. And apart from that, you will get to know more about analytics. Like we have Python, machine learning, then we have HR analytics, IoT. So you will get, it's like a very agnostic branch where you can actually decide which domain you want to go forward. And also, like if you see, we have the last year we had the highest placement 41.9, and it was from business analytics. फ्लैगशिप वाले को अच्छा नहीं लगेगा ये सुन के. ठीक है, go ahead. So यार BA program is rocking. Honestly, फॉर्म भरना है SMHRD का, एक ही फॉर्म में हो जाता है ना, या अलग अलग फीस लगती है सबको? अलग है. BA का you have to भर दो, BA भर दो, मतलब इंजीनियर हो तो भर ही दो, मतलब देखना ही नहीं है हमें आगे. हाँ जी बोलिए. And after that, like we have like live projects. So the business analytics have a higher like advantage in that, because they have the field is open for the business analytics. You can choose your field. With HR you are like you have to focus in HR, right? But being in business analytics you can go in HR analytics, you can exactly. So I'll give an example, correct me if I'm wrong. Okay, so BA मुझे लगता है is more of kind of consulting, kind of IB cuts through everything, no? IB marketing में आता है, fin में आता है. Likewise BA भी हर जगह आता है. BA fin में आएगा, marketing में आएगा, consult में आएगा, हर जगह BA आ जाता है. That's the world that we are looking at, couple of decades from now. So I think that's where BA will be a very good option for you. My next question to you would be, अभी बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, जिनका कैट शायद से अच्छा जाएगा, किसी का नहीं जाएगा, बिकॉज वो एक दिन होता है यार, अगर उसमें गड़बड़ हो गई तो क्या. एंड देन देयर आर अदर पीपल, दे आर नॉट गुड विद एप्टीट्यूड बट एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट? सो यू लेफ्ट एक्सेल, यू लेफ्ट न्यू आईएम्स एंड बेबी आईएम्स एंड अदर कॉलेजेस, राइट? वुड यू रेकमेंड दोज स्टूडेंट्स जो अभी तक सोच रहे हैं कि मैं शायद से स्नैप दूं या SCMHRD करूं या ना करूं, व्हाट इज योर एडवाइस टू दीस किड्स? See, I would say that SNAP is one of the best exam you can give, and I think among the top competition or the competitive exams, SNAP is the one which gives you multiple opportunities. You can opt for 3 tests, you can sit for 3 tests, and the best is taken, because they want the actual talent to come up to enroll for this institute, and they will nourish you and make you a future leader, because it's the one of the best competitive exams you can appear for. It is the only one which gives you the 3 opportunities, and the best out of the 3 is taken. Right. So you have, आपका हाईएस्ट किस में आया था? सेकंड स्लॉट. तीसरा बच्चा मिला है मुझे SCMHRD में जो बोलता है मेरा सेकंड स्लॉट में आया था. आई डोंट नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है सेकंड स्लॉट वैसे भी बदनाम है, बिकॉज बच्चे कहते हैं कि पहले वाला बहुत इजी होता है,
सेकंड वाला बहुत टफ होता है, थर्ड वाला ओके ओके होता है, पर ऐसा नहीं यार, टॉपर्स निकल रहे सेकंड से। तो देखो 99.50 ना, परफेक्ट है। तो हाँ, आपको देना ही देना है, मतलब तीनों अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली यार आप तीनों अटेम्प्ट भर दो। एंड अमन, माय लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आई होप C2C वाज हेल्पफुल ड्यूरिंग योर जर्नी, जब आप स्नैप के लिए पढ़ाई करते थे। यू वांट टू टॉक अबाउट इट लिटिल बिट? C2C वाज समथिंग जो कि एग्जाम्स देने से पहले हम देख के जाते थे, एंड एग्जाम देने के बाद आई यूज्ड टू वॉच रिव्यूज एंड ऑल एग्जाम दैट। देने के पहले, सपोज ड्यूरिंग इवन कैट स्लॉट, माय स्लॉट वाज 3, हाँ, so I used to see what was the like question paper pattern. So even I remember that just going to the before entering the examination hall, I used to watch C2C video, क्या reviews है, क्या है, what just was to get the an idea next slot में level क्या of हो the question paper. And after coming out of the examination hall and sitting in the car, I used to watch how the paper was according to CTC and what was the reaction, how did I perform according. So वो एक, and it was very much close to what the actual result the was. actual. Perfect है, perfect। आपका कैट में कितना आया था? CAT was 96.8 एंड आपका जैट में कितना आया था? that was 98 98। कैट में 96, जैट में 98। कैट फोड़ा, भाई ने जैट फोड़ा और फिर स्नैप भी फोड़ा। Awesome. I wish you all the very best, Naman. Thank you so much for giving some time. यार भगवान करे आप बहुत तरक्की करो। You're good. And guys, जिन्होंने ये वीडियो देखा है guys, like तो बनता है, and kindly share this video with all your friends and make sure that at the end of the day you vouch out for SCMHRD. This brand is growing. Thank you. Thank you.